Good afternoon, everyone. I hope you guys can hear me and see me. Guys, please write yes in the chat if I'm audible and visible to you. Guys, please write yes. Please confirm if I'm audible. Okay, great. So, welcome everyone. Welcome for the afternoon trading session. And we will have Nikun sir with us. My name is Avinash, and I hope you guys are having a great, start of the week. अगर मार्केट की अगर हम बात ही करें तो निफ्टी it's nearly 85% points downside. ठीक है, and to have a brief discussions about market depth about talking about the market and काफी सारे stocks के अराउंड अगर हम बात करने वाले हैं, राइट, हम करने वाले हैं, तो इस पे बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स निकुंज सर, राइट, एंड निकुंज सर हैव ऑलरेडी जॉइंड अस. So he's just setting up, his frame and his systems and everything. So we'll quickly look the indices. We'll give a very quick numbers about the indices that is currently trading right now. So Nifty अभी फिलहाल एक 92 पॉइंट्स के डाउनसाइड पे है, नियरली 0.5% 0.4% डाउनसाइड पे. बैंक निफ्टी इज 0.6% डाउनसाइड, राइट. तो अगर हम बात करें सेंसेक्स की, जिसका कल हमारा एक्सपायरी है, राइट, तो सेंसेक्स इज फ्लैटिश टू पॉजिटिव, राइट. तो दिस इज द ऑल इन ऑल द मार्केट, एंड हमें तो पता ही है मार्केट का स्टांस इज changing on a regular period of time. Market is very volatile. So yes, Nikun sir is already here. So to talk at depth about the market and give you a very deep insights about it, Nikun sir is already joined us. So Nikun sir, over to you. You can start this. Yes, my screen is visible, right? Yes, sir. Okay, perfect. So, good afternoon, Avinash. Good afternoon, everyone who joined in. Welcome to the first afternoon session of the week. It's a truncated week. We only have 4 working days for the week, and we have holiday on Friday. So, बात करते हैं पहले इंडेक्स की. निफ्टी की अगर बात करें तो इट वाज होल्डिंग फ्लोट फॉर द टाइम बीइंग. एटलीस्ट 2 बजे तक इट वाज पॉजिटिव टू फ्लैटिश टेरिटरी में था. एंड लास्ट 5-10 मिनट्स में वी हैव सीन सम शार्प डिक्लाइन इन निफ्टी. तो वी सी द कैंडल ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का एक 50 मिनट कैंडल है. तो ऊपर में is finding some resistance near the upper band, near the 22,750-800 zone. आज हाई किया था 22,670 के आसपास. तो जो गैप एरिया था ऑफ 24 फरवरी, वो गैप थोड़ा सा फिल किया है, बट वहां से थोड़ा सा रेजिस्टेंस पॉइंट भी आया है निफ्टी. तो लास्ट हम देखे तो 5 दिन में the index has seen some pullback from 21,950 or say 22,650 की ओर. तो ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट का एक रिकवरी आया था. एंड नाउ ऊपर से थोड़ा सा हर्डल फेस कर रहा है, बट नीचे में इमीडिएट टर्म में 22,350 to 200 are the immediate support points. That is 22,222 and 22,300. And ऊपर में 22,550-600 immediate hurdle है. And broader range for 1-2 weeks could be 21,800, 22,000 on the lower side, and ऊपर में 22,800, 850. जब तक 22,800 के ऊपर convincing close नहीं आती, because that was the support zone which was holding from many time, and वो gap down से break किया था, तो वो support will become resistance now. So 22,800 के ऊपर जब तक convincing close नहीं आती, तब तक थोड़ा सा sideways to bias in this range ही रहेगा. And out and out breakout would come only about 22,800. As of now, it is between the range of 22,222 and 20,300 on the lower side, and ऊपर में 22,650, 700 are the resistance point. But Nifty has been relatively outperforming if we compare it to Bank Nifty. Bank Nifty की अगर बात करें तो has been sideways from last many 7-5-6 trading session. It is trading within this range of 48,000 to 48
750. तो एक टाइट रेंज में है बिकॉज द प्राइवेट मेजर बैंक्स आर नॉट परफॉर्मिंग. अगर कोई एक दिन पे एक स्टॉक चलता है तो दूसरे दो लगा देते हैं. तो आज एचडीएफसी चल रहा है थोड़ा सा ट्राइंग टू सपोर्ट दी बैंक निफ्टी, बट उसके सामने दूसरे एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा सॉफ्ट है, कोटक बैंक रिलेटिवली सॉफ्ट. तो आई थिंक ये रेंज में इट शुड कंटिन्यू ऊपर में जब तक 48 850 900 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे नहीं आता तब तक दिस रेंज बाउंड मूव इन बैंक निफ्टी कुड कंटिन्यू. एंड थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया बैंक निफ्टी ने एज कंपेयर टू निफ्टी. Bank Nifty from the recent close of 47,950, it has only rallied 700-800 points, and उसके सामने Nifty has also rallied 750 to 700 points. So जबकि Bank Nifty is twice the Nifty in value terms. So थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है, बट ये रेंज बाउंड मूव में कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड. नीचे में 47,800 इज वेरी क्रूशियल. 47,800 ब्रेक करेगा तो वी कुड सी फर्दर करेक्टिव मूव. एंड ऊपर में 48,850. तो इमीडिएट टर्म में इफ वी स्पीक 48,000 इमीडिएट रेजिस्टेंस सपोर्ट है, और उसके नीचे 47,800 इज द नेक्स्ट सपोर्ट. एंड 47,800 इज वेरी क्रूशियल फॉर बैंक निफ्टी. एंड ऊपर में इमीडिएट टर्म में 48,550 600 इज इमीडिएट ट्रेडिंग पर से रेजिस्टेंस है. And a broader range 49,000 to 48,000 is the range for Bank Nifty for the week per se. So Nifty relatively better place, but as of now it is trading lower by 90 points and Bank Nifty is lower by 270 points. So last 5-10 minutes may we have seen some sharp downtick, and we'll see how to go about with things. And अगर स्टॉक की बात करें तो एक ओवरनाइट ट्रेड we have flashed it on the terminal as well. So I think IDBI Bank is one stock which is looking relatively decent for a BTST candidate. So एक range निकल रही है in the 30-minute chart. So IDBI Bank is our first BTST wherein we can buy at CNP, that is 7170 के आसपास. Buy on dip still 71 के 70 70 71 के आसपास, keeping a stop of 67 and look for target towards 77 to 79 on the higher side. So IDBI Bank is one BTST idea we have shared on the terminal as well. So 71 70 71 tak you can buy, keep a stop of 67 and look for target towards 76 to 78 on the higher side. So index के levels we have shared, and we have shared both in Nifty and Bank Nifty. And IDBI, one BTST idea we have shared, that is IDBI Bank. So one can focus on the same. It has given a good in 30-minute chart is a good range breakout, and you can test the previous day's high and it can surpass that as well. So keep track on IDBI. It's looking good. So as of now ये एक ट्रेड है. अगर कोई और ट्रेड समझ में आएगा तो विल डेफिनेटली शेयर, कोई बीटीएसटी या एसटीबीटी whichever जो मार्केट के डायनामिक्स के हिसाब से रहेगा विल डेफिनेटली शेयर. So as of now Bank Nifty levels we have shared, and IDBI Bank is one BTST we have shared. So I think in the meantime अगर कोई किसी को क्वेरी रहेगा या कुछ स्टॉक में अटक गई पोजीशन है तो वी कैन गाइड देम बेटर. तो कुछ स्टॉक क्वेरीज है तो वी कैन एड्रेस देम, एंड देन इन बिटवीन अगर कोई ट्रेड रहेगा एसटीपी और बीटीएसटी विल डेफिनेटली शेयर द सेम. Sure, Nikunj sir. So guys, I will repeat once again the BTST trade for you. हमने IDBI बैंक का BTST इनिशिएट किया, राइट. Currently it's trading near 72, right? तभी 71 के आसपास कुछ चल रहा था. So we have to buy it near 71 current market price. आप थोड़ा सा अपसाइड पे भी 1 पॉइंट अपसाइड पे भी बाय कर सकते हो. तो स्टॉप लॉस will be 68, right? And the target for the upside will be 77 78, right? Yes. Sir? Yes. Great. So guys, we have posted in the chat box, and please make sure you put a strict stop loss of 68 when you are initiating the trade. So meanwhile we'll focus on the stock queries as well. We'll take a couple of them. जैसे कि आपने बताया कि जब तक अगर हमें कोई ट्रेड सेटअप नहीं दिख रहा है, राइट, सिंस कंसीडरिंग कल हमारा सेंसेक्स एंड बैंकेक्स का एक्सपायरी भी है, राइट. सो विल डेफिनेटली, सॉरी
Only Sensex Sorry, expiry. yeah, Right? sorry, Sensex Monthly. start of the week. Sorry, yeah. So yes, we have our Sensex expiry tomorrow. We are tracking at it as well. Uh, Sure. so what is your view on Chambal fertilizer? So Chambal, I think 520 say 5 to 30 is a good demand zone for Chambal. जहाँ नीचे आता है तो it finds support near 530 525 के आसपास and generally gives a pullback towards 550 560. तो आप फिलहाल अपर बैंड के रेंज में है, तो we could see ऊपर में 570 580 is 580 585 is a resistance point and नीचे में अभी 550 say 555 is immediate support. So as of now it is positive only, it looks good only. तो जब तक 530 के ऊपर है, आई थिंक द 550 के इमीडिएट टर्म्स में अगर किसी की ट्रेडिंग पोजीशन है तो 550 के सपोर्ट से होल्ड कीजिए, लुक फॉर सम टारगेट टुवर्ड्स 585. अगर 585 590 के ऊपर लूजिंग आती है देन स्टॉक कैन सी फर्दर रैली टुवर्ड्स 610 आल्सो. Castrol oil. So Castrol after 2 दिन पहले it had a gap up and sharp volumes were seen and 2 दिन थोड़ा सा pull back आया है, वो gap से आज support लिया है the stock. तो 227 का एक immediate support है for Castrol and ऊपर में 249 245 से 249 is the immediate resistance zone. So 227 के support से hold कीजिए, you could see some pullback towards 227 अगर किसी की trading position है तो 227 के support से hold कीजिए long position. So just a small update. I think IDBI have seen some दो ढाई रुपए का एक अपटिक आया है, 74.37 का एक हाई किया है, I think almost 2 rupees का अपटिक आया है. So I think traders who have bought it at when we recommended, they could have seen some sharp uptick in the stock. So what is your view on ICICI Bank? ICICI Bank is trading in this range from last 8 trading sessions. तो नीचे में 1200 के लेवल एंड ऊपर में 1230. तो ये 30 रुपीस के रेंज में इट इज बीन ट्रेडिंग फ्रॉम लास्ट 8 ट्रेडिंग सेशंस. तो एक ब्रेकआउट आएगा जिस डायरेक्शन में देन वी कुड सी सम डायरेक्शनल क्लैरिटी ऑन ICICI बैंक, बट एज ऑफ नाउ स्ट्रक्चर वाइज इट इज साइडवेज. तो नीचे में 1200 इज वेरी क्रूशियल. अगर 1200 के नीचे क्रूज आती है एंड वी कुड सी सम करेक्टिव मूव टुवर्ड्स 1180 आल्सो, और 1230 के ऊपर निकल जाता है तो we could see the rally continue towards 1245 1250 on the higher side. These are purely trading technical levels, they are not investment levels. So I think one more BTST idea I think we can share. We have shared on the terminal as well. So I think SJVN is one stock, थोड़ा सा टेक्नो फंडा है, बट नीचे में आई थिंक SJVN हैज गिवन थोड़ा सा एक उनको ऑर्डर में मिला है विद रिगार्ड्स टू सम प्रोजेक्ट्स एंड टेक्निकली अपने सपोर्ट प्रीवियस डिमांड जोन के पास है. तो SJVN इज वन मोर BTST we have given and we have flashed it on the terminal as well. You can buy at CMP that is 86-20 के आसपास, keeping a support of 83 before target towards 90-92 on the higher side. So SJVN is our second BTST idea. The stock can see some price action and नीचे से अच्छी recovery देखिए on intraday charts. So keeping a support of 83, look for target towards 90 and 92 on the higher side. So current market price is 86 के आसपास, 86-20. So guys, we just a quick update guys, जो भी हमने IDBI का ट्रेड दिया था right on the BTST point of view, it just made a high of 74.35 I guess, right? तो 71 से 74 का इसने हाई ऑलरेडी बना दिया है. And we have initiated the another trade or BTST trade on SJVN. हमने SJVN पे एक और BTST trade initiate किया, right? अभी 86 पे trade कर रहा है. So with a stop loss of 83, the target for the upside will be 92. Perfect. So we have pinned it as well in the chat box. And guys, जिन्होंने भी IDBI पे trade initiate किया है, I would repeat once again, it made a high of 74. अभी फिलहाल 73 पे trade कर रहा है. You can still,
hold it with a stop loss of 68, जो भी हमने बताया था, right? अगर आपको partially book करना है, you can do it, right? Definitely, definitely. So we'll take we'll stick with taking some stock queries only. Sure. What is your view on Tata Motors? टाटा मोटर्स अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो आई थिंक स्टॉक इज मेकिंग लोअर लोज, तो थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम तो बेरिश है, लेकिन अपने प्रीवियस डिमांड जोन के पास है, जिस इज 620 630 के आसपास। तो वहां से एक पुल बैक आया है इन द लास्ट वीक, एंड आज दिस वीक मे कंटिन्यू थोड़ा सा ऊपर, बट ऑटो एज अ सेक्टर थोड़ा सा हैज बीन इन सम बेयर ग्रिप्स, एंड टाटा मोटर्स ज्यादा वीक है कंपेयर टू एमएनएम एंड मारुति। तो आई थिंक नीचे में एक इमीडिएट सपोर्ट है 620 के आसपास, बट ऊपर में हर्डल भी है 660 665 के आसपास। तो अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है तो आप स्टॉप 630 का मेंटेन कर सकते हैं, एंड अगर पुल बैक आता है टुवर्ड्स 660 देन यू शुड एग्जिट योर ट्रेडिंग पोजीशन इन टाटा मोटर्स। बट फॉर द वीकली टाइम थोड़ा सा टाइम फ्रेम पे नेगेटिव ही है, तो जो भी पुल बैक आएगा इट मे बी शॉर्ट लिव्ड। सो गाइज, अगर एक अपडेट दे दूं, अच्छा खासा एक बाइंग देखने मिल रहा है हमें, अच्छा खासा अपसाइड देखने मिल रहा है आईडीबीआई में, राइट? इट इज करंटली ट्रेडिंग नियर 75 आए राइट नाउ, 74.90, राइट? सो जिसने भी ट्रेड इनिशिएट किया है, दे आर मेकिंग अ हैंडसम रिटर्न फ्रॉम दिस ट्रेड। सो यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर द ट्रेड, क्योंकि हमने 71 पे रिकमेंड किया था, इट्स ट्रेडिंग नियर 74.9। अभी वो भी शायद हो जा सकता है। 75 है। यस। सो गाइस, इन बिटवीन सेशन हमने एक ट्रेड में ऑलरेडी प्रॉफिट बना लिया। अगर आप लोग को प्रॉफिट बुक करना है, डेफिनेटली गो एंड बुक प्रॉफिट, एंड इफ यू वांट टू पार्शियली बुक, you can partially book your profits and trail your stop loss to your buying range. It is just made a high of 75.25. Yes. We'll parallelly check the trade as well, guys, and we'll take your stock queries as well. So what is your view on Hudco 180 put bought at 7.8? 180. Right. Bought at 7.8. Okay, so I think you should hold the put option and keep a stock जो cash spot levels of Hudco है अभी 179.50, तो ऊपर में 185 के ऊपर क्लोज आएगा तो you should exit. Till the time it is holding below 185, you should continue to hold your put option. And I think अगर कल थोड़ा सा follow up आता है थोड़ा सा on the lower side, then we could make good money in the Hudco put option. So 185 के spot levels के stop से hold कीजिए। Sir, what is your view on SRF? And I guess ये stock तो हम काफी दिनों से recommend कर रहे हैं, right? We have been काफी time से we've been bullish on SRF. जो breakout आया था वहाँ से we have tried to play from 2600 odd levels. So I think daily scale पे अभी भी higher highs high lows बना रहा है, and Friday को एक breakout दिया था, आज थोड़ा सा corrective हुआ था, लेकिन the dips are being bought into. तो नीचे में इमीडिएट टर्म्स में 28 अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो 2870 का इमीडिएट सपोर्ट है, एंड ऊपर में 2980 का रेजिस्टेंस है। अगर 2980 या 3000 के ऊपर क्लोज आ जाता है देन द स्टॉक कैन एक्सटेंड दिस मूव टुवर्ड्स 3100 आल्सो, बट इमीडिएट टर्म में अगर बात करें तो 2870 इज द 2880 इज द इमीडिएट सपोर्ट, एंड ऊपर में 2980 2985 आर द रेजिस्टेंस फॉर एसआरएफ। CDSL. CDSL is weak and it may continue to be weak. थोड़ा सा 3 दिन पुल बैक आया था एंड 2 दिन वापस the पुल बैक आया था, that is being sold into. तो ऊपर में इमीडिएट में 1180 1190 is the resistance which is quite higher. तो 1160 also we can consider as resistance, but नीचे में 1070 is very crucial, 1080 rather. अगर 1080 के नीचे क्लोज आता है then the stock can correct further towards 1000 levels also. तो अगर आपकी पोजीशन लॉन्ग है तो keep a support of 11 keep a stop of 1080
एंड ऊपर अगर आता है तो यू शुड कंसिडर exiting on bounce strategy in CDSL. अगर शॉर्ट पोजीशन है आपकी तो कंटिन्यू टू होल्ड शॉर्ट, कीप अ स्टॉप ऑफ 1185. Sir, do we have any trade as of now in Sensex या कोई other indexes पर? नहीं, इंडेक्स का आई चेक, अगर कोई स्ट्रेटेजी बनती है तो विल डेफिनेटली शेयर. आई थिंक आप बिफोर वी स्टार्टेड द सेशन एक शार्प डाउनफॉल आया एंड पोस्ट दैट इज कंसोलिडेटिंग, तो विल डेफिनेटली चेक. अगर कोई स्ट्रेटेजी बनती है सेंसेक्स में तो विल डेफिनेटली शेयर द सेम. एज ऑफ नाउ द इंडेक्स इज कोटिंग एट 74,050 के आसपास. तो अगर कोई barefoot करना चाहता है तो they can do a barefoot spread also of 200 points का barefoot spread भी कर सकते हैं, wherein you can buy 73,900 का put and sell 73,700 का put. अगर 200 पॉइंट का स्प्रेड करना है किसी को, then they can do a barefoot spread in Sensex for the expiry which is tomorrow. And this strategy basically अगर किसी की long position heavy है, then they should definitely try to hedge the position by either buying put or doing a strategy wherein you have limited risk and limited reward for the index. Tata Power bought at 384.50 quantity. So what is your view on it? Tata Power Yes. bought at 350. Yes, sir. 384. Okay, 384. So SODC higher range पे buying हुए, but the stock is consolidating in this range. तो एक consolidation तो है, but ऊपर में breakout नहीं आया है. So the breakout will come only above 365, 365. तो अगर 365 के ऊपर निकल जाएगा, then he may see some जो उनका buying cost है वो आ सकता है, या उनके buying cost से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है. But नीचे में immediate support है at 345 and 340 on the lower side. So एक range bound है, but as of now from January month it is trading in this 30-40 points Tata Power. तो ऊपर में 360 365 का एक रेजिस्टेंस है, नीचे में 320 330 338 का एक सपोर्ट है. तो ऊपर में ब्रेकआउट आएगा above 365, और 365 के ऊपर क्लोजिंग आती है, then the move can be extended towards 380 385 only highs. Okay. So what is your view on Bharat Electronics? BEL, right? Okay. So BEL after a sharp run up थोड़ा सा sideways है, but नीचे में support is intact. तो 265 का strong support है, तो 265 के support से hold कीजिए आप. थोड़ा सा नीचे है 1.5%, but ऊपर में 280 का एक resistance है. तो 265 अगर long position है आपकी, तो keep a support of 265 and hold, and you can see some pullback towards 275 278 on the higher side in BEL. So Daneshwar ji have a question on Indian hotels, and हम काफी दिनों से Indian hotels, lemon tree hotels, ये सारे hotel stocks हम suggest कर रहे थे. तो Daneshwar ji ने basically Indian hotels futures, March futures, so should he hold or exit? इंडियन होटल एक साइडवेज है. आई थिंक जो दूसरे स्मॉलर होटल्स है, ये लेमन ट्री और शैलेट होटल, इवन थोड़ा सा और स्मॉलर देखे तो एच होटल एंड कामत होटल, दे आर रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग इंडियन होटल, पर इंडियन होटल इज ऑल्सो लुकिंग गुड ऑन. तो एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद 3 दिन का करेक्टिव मूव है, तो नीचे में आई थिंक 725 या 720 के सपोर्ट से यू शुड होल्ड. एंड अगर ऊपर में 765 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो यू वुड मेक गुड मनी इन इंडियन होटल. तो 720 के सपोर्ट से यहाँ से 15-20 पॉइंट्स का एक रिस्क है उनके स्टॉक में, एंड ऊपर में 780 के लेवल्स के लिए होल्ड कर सकते. So guys, this will be the last query for today. Sir, AWL के बारे में थोड़ा बताइए. AWL, Adani Wilmar. Yes. So Adani Wilmar, I think out of all the Adani stocks, I think Adani Port is the best stock. So I think Adani Wilmar एक रेंज में ही है, तो there is no such technical setup as such. नीचे में 240 का सपोर्ट है, ऊपर में 265 260 का रेजिस्टेंस है.
तो एक रेंज बाउंड है बट बायस काफी नेगेटिव है बिकॉज द स्टॉक हैज गिवन मल्टीपल गैप डाउन. तो जब तक ये गैप फिल नहीं हुआ तब तक तो स्टैंड्स वुड बी बेरिश ओनली. तो अगर ऊपर आता है आपकी पोजीशन अटकी हुई है तो ऊपर आता है तो यू शुड ट्राई टू एग्जिट द पोजीशन इन अबाउट. ग्रेट. सो निकुंज सर, बिफोर वी एंड दिस सेशन, इट विल बी रियली ग्रेट अगर आप एक थोड़ा सा सम अप कर दो, जो भी हमने ट्रेड दिया फिलहाल क्या लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है. सो इट विल बी रियली ग्रेट फॉर अस. Definitely. So I think Nifty, I'll revisit. First, I think the second BTST that we gave, that is SJBI, is quoting at 86.30. तो वहाँ पे हमने buy दिया था वहीं पे है. But you can still try carry the position, keeping a support of the price given, that is 82. I'll look for 90, 92 on the higher side. And IDBI Bank did wonders. It made a high of almost 75.20 odd. तो हमने 71-70 के आसपास रेकमेंड किया था. तो 3-4 पॉइंट का एक अच्छा स्विंग आया इन दैट. एंड निफ्टी की बात करें, निफ्टी 22,460 के आसपास है. नीचे में 22,222 इज द इमीडिएट सपोर्ट. ऊपर में 22,650 600 एक हर्डल पॉइंट है. एंड मेजर रिवर्सल कैन कम ओनली इफ यू क्लोज अबाउट 22,800. जब तक 22,800 के ऊपर क्लोज नहीं आती तब तक ये रेंज बाउंड मूव और थोड़ा सा ऊपर में हर्डल में कंटिन्यू इन निफ्टी. एंड बैंक निफ्टी में लाइकवाइज 48,000 ट्रेडिंग पोजीशन अगेंस्ट है. तो इमीडिएट सपोर्ट 48,000 एंड 47,800. 47,800 इज वेरी क्रूशियल ऑन द लोअर साइड. अगर वो उसके नीचे ब्रेकडाउन आता है देन वी कुड सी फर्दर करेक्टिंग. बट ऊपर में 48,650 700 इज द हर्डल इमीडिएट टर्म में. एंड उसके ऊपर 49,000. तो बैंक निफ्टी में 800-900 पॉइंट की रेंज है. लाइकवाइज निफ्टी में 600-650 पॉइंट्स की रेंज है. Great. So yes, that's it guys from our end. Guys, before we end the session, we have rolled out a poll in the poll section. Chat के बाजू में आपको एक poll section दिखेगा, right? So please go there and share your feedback accordingly on how do you like the session and how frequent you are joining the session. So it will be really appreciated कि अगर आप अपना feedback दे, and in this way we will be able to serve you better as well, right? So yes, it will be really appreciated guys अगर आप जाए पोल सेक्शन में, अगर आप आपका फीडबैक दीजिए, राइट? तो हम उसे और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. आपको क्या चाहिए, we will definitely try to bring it out here, right? So on that note, Nikunj sir, thank you so much for joining a session and giving a lot of insights about the market, right? And sharing the BTST trade as well on IDBI, जिसमें हमने in between session एक अच्छा खासा upside देखने मिला था, right? Yes. So yes, that's it guys from our end. I'll be here like for a minute or two just to see the poll responses. So yes.